Okay, welcome back, students. Let's move on to the next part of the question, question number 6. So it's about Adidas and Company football exporters. So here the question is a bit lengthy. Yeah, particulars is given. Name of the customers. Okay, and the customer name is C of Chicago. Okay, so there was an export sale. The transaction is of an export on 5th of January 2009, 10,000 US dollars, and the exchange rate that day was 42. Okay, so the first journal entry will be for this. Next, since it is sales, तो पैसा मिलेगा. Amount received, first installment, second installment, third installment. बराबर. So 5th Feb 3043. तो 42 के सामने 43 मिलेगा, ज्यादा मिलेगा ना, ₹1 profit. Next, 6,000 के सामने, हाँ. Now here we have to pay attention. Yeah. See the date is how much? Yeah, 25th of April. उससे पहले आएगा 31st March. Okay. Yeah. So the first transaction, yeah, 5th Jan बोला है. Let me see. Closing बराबर है 31st March 2009 and the exchange rate that day was 44. ठीक है, ये मत भूलना, हमने लास्ट लेक्चर में भी किया था, लास्ट वीडियो में. तो 25th अप्रैल से पहले 31st मार्च आएगा, तो आपको वो रिवैल्यूएशन करना पड़ेगा. ओके, बैलेंस वाले पे. ठीक है ना. ओके, या तो या और फिर ये 30th जून का एंट्री ऑफ ये. ठीक है, तो एक चीज याद रखना, बीच में 31st मार्च आया है और उस दिन क्लोजिंग रेट था 44. तो अब ये जो आप नया पेमेंट करोगे और ये वाला 42 और 45, ये 44 से कंपेयर होगा. ओके, 42 से नहीं, 44 जो नया क्लोजिंग एक्सचेंज रेट है, जो नेक्स्ट ईयर बन जाएगा ओपनिंग एक्सचेंज रेट. ठीक है, या फाइन. सो लेट्स फर्स्ट कंप्लीट द शिकागो वाला पार्ट and then we will move on to the next customer, Washington. Okay, fine, because Washington ka year is 2010. It is in the next year. So let's first complete 2009-10. Okay, fine. So let's start with journal entry number 1. So first journal entry is C of Chicago account debit. Yeah, that is on 5th of January. How many US dollars? Yeah, 10,000 US dollar, and the rate is 42. 4,20,000. Okay, it's 4,20,000. Fine. Then, so ये कौन सा ईयर है? ईयर मत भूल दो, 2009 2010. ओके, उसका ये फर्स्ट ट्रांजैक्शन है और ये सेकेंड ट्रांजैक्शन. ठीक है, यू आर रिसीविंग पेमेंट फॉर $3,000 जिसका एक्सचेंज रेट है 43 रुपीज. ठीक है, 42 का डील था, 43 रुपीज मिल रहा है. अच्छी बात है ना, ₹1 का प्रॉफिट हो रहा है सीधा आपको. राइट, ₹1 प्रॉफिट. So 3,000 into 1. Right? Or 3,000 into deal rate was 42, 1,26,000. And don't forget, this debit total should be equal to your credit total. ये मत भूलना. And then your usual narrative, the narration that you write, being money received or cash received for 3,000 US dollars, exchange rate difference $1 equal to ₹1, and profit transfer to FEF account. Okay, yeah.
Now let us come to journal entry number 3. Yeah, we'll come to journal entry number 3. ठीक है, एक पेमेंट हो रहा है 25 अप्रैल को, बट उससे पहले 31 मार्च आएगा, करेक्ट? या वो भूलो मत. So let us do the revaluation का calculation. Let's go for that. Revaluation, just a minute. Revaluation या calculation वो तो करना ही पड़ेगा because year end बीच में आ रहा है ना. Yeah, this calculation I'm talking about. Just a minute. This calculation, this one. Okay. If you want, you can note down this also, that the closing exchange rate is 44. So the same will become the opening exchange rate for the next year. Okay, तो 31 मार्च 2009 को इट इज 44, तो 1 अप्रैल को ओपनिंग एक्सचेंज रेट बन जाएगा. ठीक है, 10,000 गुड्स का डील हुआ था, उसके सामने 3,000 का पेमेंट मिला है, ओनली 3,000. ठीक है, हाँ, तो हाउ मेनी आर लेफ्ट? 7,000 इज लेफ्ट टू बी पेड. 7,000 का वैल्यूएशन नहीं हुआ है, बराबर ना? 10,000 में से 3,000 गया, 7,000 बच गया, तो $7,000 का हिसाब करना बाकी है ईयर एंड पे. ठीक है, और इसका पैसा कैसा मिलने वाला है? 6,000 और 1,000 करके, करेक्ट? सो राइट डाउन. तो जर्नल एंट्री विल कम फॉर द ईयर 2009-10. ओके, दिस वन. पुट ईयर जर्नल एंट्री नंबर 4 होना चाहिए. और उसका या that that value has to be, just a minute, कितना इसके सामने जा रहा है? 10 के सामने 3 और 6 और 1, so that will come in the next year. Okay, so 2000, हाँ, so balance 1,000. So let's see over here, just a minute. There has to be a balance wala entry over here, as FEF account also needs to be closed. It will be transferred, right? Wait, students. एक तो वो 7,000 का एंट्री हुआ है 9-10. This is one is 8-9 and one is 9-10. Okay, so the year ending they want, okay, they have given, so you have to close your years past journal entries for the year ended 31st December 2010 and also 31st March 2009. So that means 1st April 2008 to 31st March 2009. And next one will be 1st April 2009 to 31st March 2010. It should go like this. Okay. तो 7,000 जो बाकी है ना, उसका एंट्री आएगा इधर, जर्नल एंट्री नंबर 3, ये वाला 7,000 बाकी था ना. हाँ, 7,000 इंटू 2 रुपीज का प्रॉफिट हुआ है 14,000. 2 रुपीज का प्रॉफिट कैसे हुआ है? हाँ, क्योंकि आपका डील था 42 का और एक्सचेंज रेट था 44, तो आपको 2 रुपया ज्यादा मिल गया. ओके,
तो ये सेल्स है ना, तो सेल्स में हम पार्टी को क्या बोलते हैं, डेटर्स. So we will write being debtors revalued for the balance 7,000 US dollars. At the year end, exchange rate difference was 2 rupees for 1 US dollar and profit transferred to FEF account. Okay. And then your journal entry for FEF. When you prepare the FEF ledger, you will get a balancing figure. वो भी मैंने आपको बताया कैसे कैलकुलेट करते हैं बिना FEF अकाउंट बनाए, है ना. अभी जर्नल एंट्री नंबर 2 में देखो FEF कितना है, 3,000 बराबर. Wait, I'll just show you. Okay. Credit side FEF is 3,000. और journal entry number 3 में debit side, no, again credit side FEF is 14,000. Okay. So when you close this ledger, debit side में कुछ भी नहीं है, आपका बैलेंस कितना आता है, 17,000. बराबर ना, 17,000. क्रेडिट साइड में 17,000 ज्यादा है, क्रेडिट साइड इज मोर, है ना. ये 0 है और क्रेडिट साइड में 17,000 है, तो प्रॉफिट हुआ ना. तो देखो पीएनएल प्रॉफिट, एफईएफ अकाउंट डेबिट टू पीएनएल 17,000. अंडरस्टूड. So without preparing FAF account, you can still calculate the amount that can be transferred to PNL. Okay. Then coming to the next accounting year, that is 2009-10. This will be the first journal entry. Please change the journal entry number when you're changing the financial year. Don't write your journal entry number 5. No. This is a new year. So this will be journal entry number 1 as per that accounting year. Okay. अब आपको क्या मिल रहा है, 6,000. हाँ, तो अब आपका एक्सचेंज रेट है 44 और उसके सामने आपको मिल रहा है 42 रुपीज, 2 रुपया कम मिल रहा है. ठीक है. तो 6,000 इंटू 2, तो 12,000 का लॉस. 6,000 इंटू 42, 2,52. ओके. एंड 6,000 into 44, 2,64. This debit side total should be equal to the credit side total. Okay. Then the second journal entry, yeah, with respect to that $1,000. Okay. तो अगेन इसके सामने भी एक्सचेंज रेट, नया एक्सचेंज रेट क्या है, 44 ओपनिंग एक्सचेंज रेट, और उसके सामने आपको कितना मिल रहा है, 45 रुपीज. 1 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है आपको. रिकॉर्ड करो. ठीक है. देखो 1,000 इंटू 1, 1,000 into 44, 1,000 into 45. Okay. Your debit side total, credit side total should match. Okay. So these are usual entries which we have been passing in the last sums also that we have been doing. So these are the usual entries. Okay. Pass entries for sales or for imports. Then see money is coming in or money is going out. See the exchange rate difference. Okay. If any balance is left on any dollars to be paid or to be received, accordingly revalue that, whether it's a debtor or a creditor. Okay. And at the end of the financial year, do transfer the FEF balance to P&L account. Okay. Okay. So this is journal entry number 2 and this is journal entry number 3 for the year 2009-10 for Washington. Okay. The next customer. ठीक है. 2 कस्टमर थे ना, एक शिकागो और एक वॉशिंगटन. ओके. तो इसका डेट 7 जनवरी 2010, मतलब 2009-10 सेकेंड ईयर में आएगा. ये इसका ट्रांजैक्शन है 20,000 और ये इसके इंस्टॉलमेंट्स है. ओके. और भूलना मत, इसका एक इंस्टॉलमेंट 31 मार्च के बाद है, तो उससे पहले ये रिवैल्यूएशन में जाएगा. बराबर ना. ठीक है. तो 20,000 के सामने मुझे मिल रहा है 6,000 का पेमेंट, मुझे मिल रहा है एक 8,000 का पेमेंट. ओके. और फिर बाकी का एक 6,000 का पेमेंट मुझे 31 मार्च के बाद मिल रहा है. 31 मार्च तक तो ये ड्यू रह जाएगा ना.
तो 6 + 8 14, 20,000 - 14,000 6,000। तो ये इस पे मेरा रिवैल्यूएशन आएगा एट द ईयर एंड। ओके, एक्सचेंज रेट वही 40। हाँ, फॉर 2010 ये रहा 45। ठीक है, 2009 में 44 और 10 में 45 है एक्सचेंज रेट, तो ये भूलना मत। तो जर्नल एंट्री नंबर 3 फॉर 2009-10 ये रहा, जर्नल एंट्री नंबर 3 वॉशिंगटन। 20,000 इंटू 43, 8,60,000। देन 44 के सामने आई एम रिसीविंग 43, 1 रुपया कम मिल रहा है तो लॉस। अच्छा, आई एम सेइंग उल्टा, सॉरी। आई एम रिसीविंग 44 and the rate, opening rate is 43, so I'm getting 1 rupee more, so it's a profit. Okay, 6,000 into 1, 6,000 into 43 and 6,000 into 40. Journal entry number 5. So 43 is the exchange rate and I'm receiving 43 only, so no profit, no loss. Okay, तो FEF account नहीं आएगा। तो कैश बैंक 8,000 into 43, yeah, same. फिर वो रिवैल्यूएशन वाला, राइट, 6,000 का रिवैल्यूएशन था ना। तो आपका एक्सचेंज रेट कितना है? ओपनिंग रेट नया 45, राइट, और 31 मार्च 43 दिखा रहा है, तो 2 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, राइट। ओपनिंग आपका 43 है, ओपनिंग प्राइस, ओपनिंग एक्सचेंज रेट, और आपको मिल कितना रहा है? 45 मिल रहा है, 2 रुपया ज्यादा मिल रहा है ना। तो 6,000 इंटू 2, 12,000 का प्रॉफिट हो रहा है मुझे। फिर वही, आपका FEF अकाउंट आपको बनाना है और बैलेंस पास करना है FEF में, बराबर। वही जो मैंने टेक्निक बताया डेबिट और क्रेडिट वाला, वही टेक्निक देखो and your answer should be 7,000. If you don't understand that technique, then you can also prefer making a FEF ledger like this way. Okay, you can even make it this way. You can make a note of this. Just that I will just concise this size. Okay, that concept that I explained, है ना। 20 के सामने 14,000 का कैश मिला है, $14,000 का, 6,000 बैलेंस है। Okay, the revaluation आएगा, it's not no revaluation, it's a revaluation. Okay, and this is the FEF ledger for the second year. I'm getting a balance of 7,000 when you close the ledger. So your journal entry will become FEF to PNL. Okay, so I hope this part is clear to everyone. Okay, so the sum was a bit lengthy, but it was very repetitive because दोनों भी जो transactions है वो 2 कस्टमर के हैं, ऐसा नहीं है कि एक कस्टमर है और एक
एक आपका क्रेडिटर, ऐसा नहीं था, सब में दोनों ही कस्टमर थे, तो ऑब्वियसली रेपिटेशन ऑफ जर्नल एंट्री होगा। ठीक है, तो इसका आपको जर्नल एंट्री पास करना पड़ेगा। ठीक है, तो फर्स्ट ईयर में भी देर आर 6 एंट्रीज and second year में there are 7 entries. I'm talking about this entry that has to be passed from the FEF account. If you're not making the FEF account, then do it without the ledger, the technique that I have taught you. Okay, so let's meet in the next video then. There's some different concept.